जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभो, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, श्रीमती राधा रानी की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। उपस्थित भगवत कथा अनुरागी, Hare Krishna, please accept my humble obeisances. I extend my heartfelt gratitude and a warm welcome to all the senior Vaishnavas of International Society for Krishna Consciousness. I also extend my deep gratitude and heartfelt welcome to all the devotees who have assembled here on Zoom platform and also through different social media platforms like Facebook and also YouTube. I also extend my heartfelt and immense gratitude and welcome to the host Makavana family and the 4 generations of members of this Makavana family who have organized this beautiful katha in the loving memory of Becharbai Makavana from Charlotte, US. So I extend जिनमें प्रमुख हैं दयाल भाई, विमला बहन, केयूर भाई, and Bimlaben and their sons and daughter-in-law Keyurbai, Kokilaben, Ankurbai and Bhumiben, and also their kid Misty. So I welcome each one of you to the third day katha of this 307th katha. Hare Krishna, Radhe Shyam. रास्ते में ब्रह्मा जी मिले। You see, when I was on my way to this katha, I met Brahmaji. Long beard, white beard, 4 heads. So I asked a question to him. I asked him how the things were going with him, to which Brahmaji replied that everything is going real perfect. Then I raised a question to him that, oh Brahmaji, whose bhakti are you engaged in? Who do you worship? And he, Lord Brahma, gave a wonderful reply which I noted down for each one of you. Lord Brahma gave the reply which is there on the screens before you. So the reply of Brahmaji was something like this, which is there on your screens. गौलोक एव निवस त्यखिलात्म भूतो गोविंदमादिपुरुषं
तमहम भजामि। ब्रह्मा जी आप भजन किसका करते हो? तो कहा So when I asked Brahmaji, whose worship are you engaged in? Whose name do you chant? He replied, Govinda Madi Purusham Tamaham Bhajami. तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया ब्रह्म So संहिता के 5वें अध्याय Brahmaji replied in the shloka, के which is गोविंद मादि a shloka of तमहम भजामि। Brahma Puran's मैं 5th गोविंद का chapter. भजन करता हूँ। Brahmaji भाई said, गोविंद का I क्या भजन करते chant, हैं आप? I do the bhajans of Govindam. तब ब्रह्मा जी कहते हैं क्योंकि गोविंद And when आदि पुरुष, asked दूसरी लाइन के that अंत में आपको why बता does he दूं, engage himself in doing the bhajans देखो and आपको kirtan of छोटा सा Govindam? कष्ट नहीं देते हैं, श्लोक भी रेडीमेड, और फिर आपको हम ये भी बताते हैं दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, पहला शब्द, दूसरा। अब इससे ज्यादा तो मैं कितना कहूं आपको? हाँ? आपको आंख भी घुमाने का कष्ट नहीं दे रहे हैं। सीधा हम कहते हैं, दूसरी लाइन के थर्ड लास्ट शब्द को आप देख सकते हैं, गोविंद मादि पुरुषम तमहम भजामि। तो भजामी, ब्रह्मा जी कहते हैं भजामी, अहम भजामी, मैं So भजन Brahmaji करता हूं says, किसका? I am engaged in doing bhajans of Govind. भाई गोविंद का भजन क्यों करते हैं? क्योंकि गोविंदम आदि पुरुषम, गोविंद जो And है he is सबका engaged आदि in है, doing उसका bhajans कोई आदि of नहीं है, Govind वो because there अनादि है। is no beginning, no वो end to संसार him. के रूट, समस्त देवी देवता गंध, Somebody who is the root of all the world. यक्ष मनुष्य, That is Govindam. सबके रूट है गोविंद। सबके Govind is आदि the है root गोविंद। cause of everything. He has no beginning and no महामंत्र end. कहते हैं ये गोविंद मेरा भी आदि, मेरा भी बाप है, Lord Brahmaji इसलिए says that he मैं is गोविंद का भजन करता हूँ। the beginning and the end of everything, and hence I'm engaged in तो chanting the फिर मैंने name प्रश्न पूछा, of Govind. हम આપણે તો પૂછીએ જ ને, हम બધા રસ્તામાં બ્રહ્મા મળે તો પછી આપણે થોડી બાકી રાખીએ। तो भाई आपका गोविंद रहता कहाँ है? So now the next question, गोविंद का तो आप भजन where does करते, Govind stay? लेकिन वो गोविंद रहता कहाँ है? So what is तो the फिर उन्होंने abode of भाई Govind? शुरुआत में कहते हैं So गौलोक in the में रहता second line, in the है मेरा beginning, the shloka ठाकुर, says मेरा that ठाकुर, मेरा Govind, श्याम my सुंदर Thakur, कृष्ण, my जिसका Shyam मैं भजन Sundar, करता हूँ, my वो Krishna, गोलोक में whose रहता name I है। chant always, stays in Golok. अच्छा, गोलोक में रहता है? बोले हाँ, गोलोक एव, एव शब्द जो ना बड़ा महत्वपूर्ण है। एव, निश्चित ही वह गोविंद गौलोक में रहता है। तो गोलोक एव निवसति अखिल आत्मभूतो, उस गोविंद का एक गुण बताते हैं कि वो गोविंद कैसा है? अखिल आत्मभूत। अखिल माने सबकी आत्मा, सबकी So परमात्मा one of जो the है, quality of Govind वो is गोविंद है। that Govind is everybody's soul. जब इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं गोविंद का भजन करता हूँ, और वह गोविंद सबकी आत्मा, सब परमात्मा, सबके रूट है, और वह गोविंद, वो कृष्ण गोलोक में रहता है, तो फिर मैंने अंतिम प्रश्न आप लोगों की ओर से पूछ दिया। Now, once I got बाकी this रखने का answer from Brahmaji, कि वो वहां करता I क्या then है? shooted the last question to Brahmaji that if Govind is the beginning and the end of everything, he stays in Golok and he's the one whose name you chant always. My question was, then what does your Govind do there in Golok? समझने का प्रयास Now करें। Brahmaji replies that what is शास्त्र के बहुत बड़े Govind बड़े गीत engaged सिद्धांतों in को while मैं he बहुत stays सरल in करके Golok? प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ, So now this is gonna be आपको some समझ में आ जाए। long discussion, and I'll try to simplify it तो as गोविंद गोलोक में much रहते as हैं, possible. गोलोक में So रहते Govind रहकर stays in Golok, and what is Govind engaged तो in as कहते he हैं stays in Golok? आनंद Then the shloka चिन्मय goes रस like this. What is there on your screens before you? The first line, प्रददामि particularly. यः एव निज स्वरूप तया कलाभिः। अब देखो,
गोविंद जो है गोलोक में रहकर करता क्या है? So what does तो ब्रह्मा Govind ने सबसे engage पहला शब्द himself क्या in as he कहा? stays in Golok? पढ़ो So the पढ़ो पढ़ो first thing आपके लिए that श्लोक रखा है। Brahmaji said, the first word that गोलोक में Brahmaji रहकर क्या said, करता है? थोड़ा जोर से बोलिए, सुनाई दे मुझे। आनंद करता है। so he's engaged in enjoying pleasure, eternal और हम लोग pleasure, अमेरिका में, कनाडा में, यूके में Anand. क्या करते हैं? दुखी का डालिया। And each one of us कहने are के लिए actually तो हम लोग बोलते sad हैं कि मौज staying in very US, good, Canada, सुनो, सुनो, सुनो। etc. Very good, For good, the good। sake of saying मजे it, we में। say that I'm fine, I'm लेकिन doing यहाँ great, कुछ मजे में but the नहीं है। fact is there's no pleasure, तो ब्रह्मा no गोलोक में happiness. भजन करते हैं, गोविंद गोलोक में रहते हैं, और गोलोक में रह So रहे Brahma गोविंद engages को in क्या है? chanting Govind. आनंद Govind कहते हैं। stays in Golok. And what does Govind do as he stays अच्छा, in हम भी अपने Golok? जीवन में That he's मान in the लेते state हैं of कि हम भी happiness, आनंद कर in the रहे हैं, state of हम भी सुखी हैं, enjoying हम भी प्रसन्न and हैं, pleasure लेकिन mode. हमारे आनंद में और गोलोक में रहने वाले गोविंद के आनंद में फर्क क्या है? Now, for डिफरेंस some क्या time, है? if we अंतर क्या assume है? that even तो we are देखिए दूसरा happy, then शब्द, what is the difference in the गोविंद state का जो of आनंद we है वो being कैसा है? happy आनंद and the pleasure चिन्मय। being enjoyed by गोविंद Govind? का आनंद जो The है वो state of चिन्मय है। pleasure being enjoyed by Govind is चिन्मय का Chinmay. अर्थ होता है Chinmay ज्ञानमय। means गोविंद का, knowledgeable. कृष्ण गोलोक में गोविंद रहते हैं और गोलोक के गोविंद का आनंद आनंद चिन्मय, वो चिन्मय आनंद है। The और pleasure हम of भी यहाँ Govind पर is थोड़ा बहुत Chinmay. आनंद करते हैं, वो चिन्मय आनंद नहीं है। But the happiness and the state of pleasure चिन्मय का that we अर्थ होता enjoy है is not Chinmay. ज्ञानमय। Chinmay means गोविंद का knowledgeable, आनंद which ज्ञानमय is है full of और knowledge. हमारा आनंद अज्ञानमय है। ध्यान से The सुनिएगा। state of pleasure that गोलोक we में have गोविंद का जो is आनंद है not भगवान के आनंद में Chinmay. है, It लेकिन is वो rather उनका full of आनंद चिन्मयी माने ignorance. ज्ञानमयी है, भगवान का आनंद। और हमारे जीवन में भी आनंद होता है, नो डाउट, आप सबके जीवन में आनंद है इसलिए तो जी रहे हैं, लेकिन हमारा आनंद कैसा है? अज्ञानमय। So the state of happiness that we are placed in is हम full of अपने जीवन में जब ignorance. भी आनंदित होते हैं, सुखी Now होते just try होते to हैं, recall वो and आनंद वो सिर्फ reconnect अज्ञान का that है। whenever we have been in a state of happiness, so-called happiness, that सो happiness is भगवान का not, आनंद ज्ञानमय है, हम a लोगों का state आनंद of अज्ञानमय है। knowledge, rather it is a अब state of अमेरिका में तो पता ignorance. नहीं, लेकिन भारत में Now, आदमी सुखी होने के लिए, I cannot comment upon आनंदित US and होने के लिए Canada, वो but क्या in करता है? India, अपने you know, घर से निकलता an है, individual, in अपना order बीड़ी to तंबाकू claim की that दुकान में जाता है। he's happy, he भाई steps एक out of गुटखा his दे दो। home and he देखिए stops गुजरात by के at लोग the यहाँ gutka आके shop उपस्थित है ना, केयूर भाई and निमंत्रण that he किया है, એટલે આ asks બધું for a gutka. cover કરવું પડે। तो हम क्या कहते हैं भाई, एक माणिक चंद दे दो, So what do या we दो say गुटखा in दे दो। Gujarati? Manik Chand. तो ये Oh हमारा bhaiya, आनंद, हमारा give आनंद me a sachet वो of गुटखा, Manik वो Chand, तंबाकू, वो सिगरेट खाता है। tobacco, cigarettes. जैसे मतलब वो खाता भी है तो शान से है, वो गुटखा भी खाता, तंबाकू शान से खाता है, और फिर मान लेता है कि बस मैं प्रसन्न हूँ, मैं सुखी हूँ। So after having ये consumed that ये gutka, हमारा आनंद है, that लेकिन ये tobacco, आनंद कैसा है? that cigarette, अज्ञानमय आनंद है, इसमें कोई the ज्ञान नहीं है। individual feels that he is really very, गुटखा, very happy. सिगरेट, तंबाकू, जर्दा आदि खाकर हम सोचते हैं कि हम आनंद में हैं, वहां आनंद नहीं, वहां प्रॉब्लम के अलावा और कुछ नहीं होगा। In fact, this is not a state of happiness. This is not कैंसर की a संभावना होगी, situation of happiness, दांत but बिगड़ेंगे, rather all शरीर issues. बिगड़ेगा, There can be ये बुद्धि मंद probability हो of जाएगी, cancer. केवल The mind अज्ञान। might go इस दुनिया slow. में हम जो आनंद There कर would रहे be हैं, numerous health वो problems आनंद का also. धरातल जो है वो अज्ञान है। So, in this physical world, in this दूसरा material एग्जाम्पल, world, हमारा the आनंद state of कैसा है? happiness is based हम on जब अज्ञान में the हो जाते हैं platform ना, of तब हम सोचते हैं ignorance. कि हम आनंद में हैं। प्रायः अब Usually, थोड़ा अमेरिका में आ जाते हैं, you see what happens. प्रायः यहाँ लोग शराब पीते हैं। Let's talk about लिकर, US, that शराब। usually क्यों? people do consume liquor. And what's the क्योंकि ये reason? मन, ये बुद्धि, Because यहाँ the वहाँ mind, भटकती है, the बहुत body, सारी the बातें heart, चिंतन होती हैं, बहुत सारी is भावनाएं engaged in याद too आती many हैं, tasks. उसने ये कह दिया, उसने वो And कह दिया, also there's a फलाने lot ने of ऐसा कर दिया, burden उसने of ऐसा कर दिया। hassles फिर क्या with the करता है? different people of आदमी the दो world. बोतल पी जाता है।
And in such state of tension, the person consumes liquor. The intoxication of this liquor and alcohol basically detaches us, basically takes us away from the state of knowledge. It takes it to the state of uh, forgetfulness from knowledge, away from knowledge. So this state of being forgetful or away from the state of being knowledgeable is the state which we feel that is the state of happiness. अज्ञानमय है, बिल्कुल अज्ञान से भरा हुआ है। मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया कि सिगरेट के पैकेट पर लिखा होता है cigarette is injurious to health. Even fail to understand to this day that on the packet of cigarette it is written very clearly that cigarette smoking is injurious to health. So the one who manufactures it, the one who sells it, the one who buys it, the one who consumes it is very well aware that it is injurious to health, but still, because of being in the state of ignorance, we feel happy about consuming and smoking cigarette. उसमें अज्ञान के अलावा और कुछ नहीं है। ज्ञानमय आनंद जो गोविंद गोलोक में लेते हैं वो मात्र स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पर ही पॉसिबल है। The pleasure of the state of pleasure, the state of being happy enjoyed by Lord Krishna and Golok is actually Chinmay, which is full of knowledge. So you see, just recently we've had vaccination against COVID, right? You see the after effects that the COVID vaccine produced in our body. So some people showed the effect of body pain. So for that, in order to get relief from the body pain, we took painkillers. So the moment we take this pain, हो गया। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात को? हम सोचते हैं बस सुख मिल गया, आनंद मिल गया, लेकिन जैसे वो दवाई का feel happy about it. But the moment the effect and influence of the painkiller goes away, it is diluted again, we come back to the state that we are not happy. So the foundation and the base of this material world is full of ignorance. So to put it in a nutshell, the state of happiness that we feel is actually happiness. It's not happiness in real sense of the term, but the state of ignorance. There is no happiness in this material world. And because we assume that it is happiness, so this is nothing but just ignorance. Imagine Lord Krishna, who has created this world, this universe, and he also put a label. And what is that label upon this material world? Lord Krishna said, "Oh Arjun, I made this world, I made this material world, but this world is full of sorrows. This world is full of pain." So imagine the creator himself calling this material world as a place full of sorrows and problems. But still, if we consider this as a place we can get happiness, we can seek happiness, then this is nothing but only a state of ignorance. Now let us go back to Brahmaji. So Brahmaji said that I engage myself in doing bhajan and kirtan for Govind, who has his abode in Golok. And then what is Govind doing in his abode? And the answer is that he is enjoying an eternal state of happiness in Golok. Now, to stay in this eternal state of happiness, what does Govind do, or where does this happiness comes from? So Lord Brahma answered that this happiness comes from mellows. फिर भी मैं इतना तो विस्तार नहीं कर रहा हूं, नहीं तो जो नए नए लोग हैं सोचेंगे कि ये क्या चल रहा है। तो रस, mellow, ये जो
कहाँ से प्राप्त होता है? रस से। Happiness which is full of knowledge is sourced from mellow. And where does this mellow come from? What is the source of mellow? So mellow means, को खाने से मिलता है, या शराब so in the material world, people get this mellow मिलता है। from chewing tobacco ऐसा हम लोग or सोचते from हैं, opening हमारी the alcohol अंडरस्टैंडिंग है। bottle. हम लोग सोचते हैं कि बस वो यहाँ से नॉनवेज खाने से रस मिल गया, तंबाकू खाने से So for शराब some, mellow comes from consuming non-veg or from रस consuming एक liquor. और मात्र एक Mellow, प्रेम it से can be प्राप्त sourced होता है। only कहाँ से? from love. वो रस, वो आनंद प्रेम करने से प्राप्त होता है। So the pleasure, the happiness has its source in mellow, आनंद चिन्मय which रस comes से। from love. गोलोक में गोविंद क्या करते So हैं? the term is चिन्मय Anand आनंद, Chinmay Ras. वो प्रेम प्राप्त करते हैं। So being in Golok, जब Govind is भगवान की बात engaged आती है ना, in परमात्मा से enjoying तो अपने happiness आप which ही is सोचो। Chinmay, and अगर that मैं बोल रहा हूँ comes तो from बच्चों ने ऐसा सोचा कि love. तो हम भी प्रेम करेंगे, कॉलेज में उस लड़की से प्रेम करेंगे। Now I'm very confident as I speak, as I utter. A lot of youngsters who are listening to me will fall down to material world and say, and they will tell themselves that from tomorrow they shall engage in loving X, Y, or Z girl in their college. चिन्मय रस, So try to understand, I'm talking about the spiritual world, right? So when we talk about love, we're talking about the love of the spiritual world. सो ज्ञानमयी प्रेम से आनंद प्राप्त करते हैं गोविंद गोलोक में। ये कंप्लीट पॉइंट है। सो गोविंद गोलोक में So in his abode Golok, ज्ञानमयी प्रेम के द्वारा from the knowledgeable love, Govind enjoys happiness, seeks pleasure. भौतिक जगत में In this material world, भगवान को छोड़ you see, in this material world, वस्तु से या किसी भी except व्यक्ति से Lord, प्रेम करो, if you engage yourself in loving a person, what you shall get in return is nothing other than pain. History bears testimony to this fact that whosoever was कोई लड़का लड़की से प्रेम करता है और कहता है कि मैं प्रेम करता हूं, वो दुख के अलावा कुछ नहीं। return, what this person got was pain लड़की की बात नहीं, and sadness. बाप अपने बेटे से प्रेम करता है, Be it the father and the son. बाप भी भौतिक तत्व से प्रेम दुख के अलावा कुछ नहीं पाएगा। So loving the material element will always bring pain and problems, because प्लेटफॉर्म पर ही पॉसिबल है। love in real sense of the term is possible only at the spiritual world. See, because the soul is eternal, it cannot be destroyed. It can only be happy. It can only enjoy pleasure when it is engaged in loving and affection with eternal element and not material element. सच्चा होगा, लेकिन जो पात्र है वो So you see, the object that is to be loved, if it is material in nature, it cannot give you happiness. So because soul is an spiritual element, the happiness to soul can only come with spiritual element and not material element. स्त्री ने पुरुष से प्रेम किया, दुख के अलावा कुछ नहीं पाया। आपने भी जीवन में प्रेम किया ही होगा ना। So I'm very confident each one of you might have engaged in loving someone or the other in the material world. So I'm very confident you might have got the pains of your own life, be it of school or college, etc., isn't it? इस भौतिक जगत का प्रेम एक और मात्र एक दुख प्रदान करता है। The love of the physical world, the love of the material world would always bring pain, sadness. Imagine how much does a mother love her son, but what does she get in return? Problems and pain. Pain and problems alone. Why? Because this is material world. आध्यात्मिक जगत में ज्ञानमयी प्रेम होता है और इस प्रेम में केवल आनंद ही आनंद होता है। However, in the spiritual world, the love is full with knowledge. It's a knowledgeable love, and hence what you get in return is happiness
and happiness alone. So Brahmaji said that in Golok, Lord Krishna, Bhagwan Krishna Chandra, is seeking pleasure by knowledgeable love. Knowledgeable love. Now, the question is, in order to enjoy love, then you would need somebody else, isn't it? So you need to have someone for love to happen. So for this, in order to have that pleasurable love which is full of its knowledge, Lord Krishna went on to create. So Lord Krishna now created out of himself his own self. So Lord Krishna expanded himself in his own form. So he created his another form, same form. And what is that form? That form is nothing else but Srimati Radha Rani. So this was the Haladini potency. You see, Lord has numerous potencies. So Lord Krishna created so Lord Krishna from his Haladini potency created Srimati Radha Rani. मतलब इससे ऊपर कुछ नहीं हो सकता. कृष्ण को परम 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 आनंद देने हेतु, परम प्रेम करने हेतु निज स्वरूप प्रकट किया और वह स्वरूप है श्रीमती राधा रानी. So Lord Krishna expanded from his own self his Haladini potency, which is Srimati Radha Rani. भावहय चिंतामणि सार कृष्ण वांछा पूर्ण करे यही कार्य जार. सो निज स्वरूप कृष्ण ने प्रकट किया. So Lord Krishna produced the form which is Srimati Radha Rani. So what does Srimati Radha Rani do? Whatever desires Lord Krishna has, completing those every desire is the task of Srimati Radha Rani. Completing each and every desire of Sri Krishna is the work, is the task of Srimati Radha Rani. Now, in her task to complete the desires of Srimati Radha, of Sri Krishna, Srimati Radharani felt that somehow something is missing somewhere. So basically, you see, Lord Krishna is the supreme consumer, supreme enjoyer. Every now and then, he has one or the other desire. So, Radharani realizes that Lord Krishna is the supreme enjoyer and that he has numerous desires. So, it is not possible for me, for Radharani, to completely fulfill all the desires. So, Radharani expanded her own self, and from her own body, Srimati Radharani produced the Ashtasakis. Lord Brahma basically said this in the first line on the screens before you towards the last, that Srimati Radha Rani expanded herself
the Ashtasakis. So Krishna produced and expanded himself in the form of Radha Rani, and Radha Rani also further expanded from her own self the Ashtasakis. So श्रीमती राधा रानी ने सखियों को प्रकट किया। वैसे तो आप सब जानते हैं ना अष्ट सखी हैं, वैसे श्रीमती राधा रानी की ये अष्ट सखी जो है श्रीमती राधा रानी का ही अंश है, श्रीमती राधा रानी का ही स्वरूप है। और राधा Ashtasakis are no different from Radha Rani herself. They are nothing but Radha Rani itself. So what was the need of producing these Ashtasakis? To cater to the desires of Sri Krishna. रांकोली गांव में इंदु लेखा प्रकट हुई, Indulekha in Rankoli village, in Karhala village, Champaklata, Chiksoli, Chitralekha or Chitra Saki got in Dabra village, Rang Devi and Sudevi. भक्तों आज के दिन की महिमा, You see, the glory of today's day कथा ली है is very, very auspicious. रोज नए नए उत्सव। अब आज के दिन की महिमा अष्ट सखी में से एक सखी का आज One of the Sakhis from the Ashta Sakhis has their appearance day today. माता शारदी, शारदी माता और महाभानु Mata Shardi जन्म भाद्र शुक्ल षष्ठी and Bhanu Gop, के दिन हुआ। from them, गांव में रहने वाली one of the Ashta Sakhi, Sri Lalita Sakhi appeared today. सखी की भक्तों आज ललिता सखी का जन्मदिन है और संक्षिप्त में ललिता सखी की महिमा आप You see, today is the appearance day of Lalita Sakhi. कला भी कृष्ण को प्रसन्न करने हेतु राधा ने देखा कि मैं अकेली So, पॉसिबल to please and to fulfill the desires of Sri Krishna, Radharani expanded herself in the form of Ashtasakhis. Amongst the Ashtasakhis, the prime position is of Lalita. चैतन्य चरितामृत में जब इसको गिनाया गया तो प्रथम स्थान श्री ललिता जी का पाया गया, इसलिए कहते हैं Was backed by Sri Lalita Sakhi. Let us see what is there on our screens before us. कृष्ण वांछा पूर्ण करे यही कार्य जार, महाभाव चिंतामणि राधार स्वरूप, महाभाव चिंतामणि राधार स्वरूप, ललितादि सखी तार काव्य व्यूह रूप, ललितादि सखी तार काव्य व्यूह रूप। कविराज गोस्वामी कहते हैं, So Kaviraj Goswami goes on to say that श्रीमती राधा रानी कृष्ण के लिए क्या है? the most splendid mood, Srimati Radharani. So Srimati Radharani is kind of Chintamani to Sri Krishna. So Chintamani means whatever Sri Krishna is desirous of. So there is no need for Lord Krishna to utter anything to Radharani. Whatever Sri Krishna will desire in his mind and heart, Srimati Radharani would automatically get to know, and Srimati Radharani would serve that. इसलिए कहते हैं सही महाभाव है चिंतामणि सार, राधा रानी कृष्ण के लिए चिंतामणि है। So Radharani is just like Chintamani to Lord Krishna, that she can serve anything, whatever is desire, whatever is the desire of Lord Krishna. और कहाँ राधा रानी
Imagine मन की बात को हाजिर करके Srimati Radharani could read the mind and heart of Sri Krishna. What a great, splendid mood कृष्ण of की Srimati वांछित इच्छाओं Radharani. को पूर्ण करने हेतु राधा रानी ने सखियों को प्रकट किया। आप So, कहोगे in order to कृष्ण की fulfill the सखियां हैं, desires of वो Sri सभी की Krishna, सखियां, उन सभी Radharani सखियों में expanded मुख्य herself आठ in the सखी हैं। form of उन Ashtasakis, आठ and the सखियों में first and मुख्य है foremost वो सखी amongst जिसका all आज the हैप्पी Ashtasakis बर्थडे है, is जिसका आज जन्मदिन Srimati है। Lalita Sakhi, तो who आप has कहोगे her कैसे कैसे appearance कैसे today. कैसे तो यहाँ पर सबसे पहले ललिता सखी का नाम लिया और फिर कहा इत्यादि वगैरह वगैरह। So you see, even in the shloka before you, it is Lalita Adi, means Lalita and others, etc., as the Ashtasakis. ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं गोविंद So what is Lord Brahma saying? That he is engaged in chanting the holy name of the Lord who stays in Golok, and in Golok, का आस्वादन करते Lord हैं Krishna is और enjoying उसके लिए कृष्ण pure, प्रकट हुए holy, और कृष्ण से knowledgeable, मिलवाने हेतु राधा ने सखियों को प्रकट mellow, किया। and which is उन fulfilled सखियों में by मुख्य है ललिता Srimati Radharani, and Srimati और Radharani मुख्य है expand herself in the ललिता form of सखी। Ashtakis to cater to the desires श्रीमती of Lord राधा रानी Krishna. से And 14 amongst the पूर्व है ललिता Ashtakis, सखी। you see, अब आपको तो आदत सी पड़ गई है, आप prominent ललिता is जी के Lalita दर्शन करिए। Sakhiji, and Lalita Sakhiji is, you see, कितनी 14 अद्भुत days छटा है, elder to Srimati कितनी बड़ी Radharani. सखी है What a beautiful ललिता appearance सखी। and form of Lalita श्रीमती Sakhi. रानी से 14 दिन बड़ी है So she is और 14 days उससे elder to दूसरे Srimati राधा रानी Radharani, से 27 दिन बड़ी है। जो while भी है बड़ी some other text says that she is 27 वो days सखी elder है to Srimati जो Radharani. राधा को भी आदेश देती है। And राधा interestingly, बहुत she is सुशांत है, one चुप Sakhi रहो। who can also lecture Srimati Radharani what she should be doing. ललिता जी अद्भुत पात्र है। So she is an वो amazing ललिता जी के शरीर का रंग entity. The गुलाब complexion जैसा है। of Sri Lalita Sakhi ललिता जी के is, वस्त्र मोर पंख की कांति वाले उनके वस्त्र हैं। her attire और is like ललिता the जी की सेवा shine क्या है? and luster of the ललिता जी peacock. की सेवा वैसे बहुत सारी है, लेकिन And what इनकी is the service is she engaged in to Lord हमेशा इसके Krishna? बाजू में खड़ी रहती हैं। आप कैसे पहचानोगे She ललिता सखी कौन है? always stands besides वैसे Sri ललिता Krishna. कृष्ण साथ में होते हैं ना, तो जो कृष्ण के बाजू में कृष्ण So को Lalita कंट्रोल and करने Vishakha वाली खड़ी Sakhi है is वो always ललिता है। together. So the one who stands closer और ललिता जी to की मुख्य सेवा Sri है Krishna is कृष्ण Lalita को पान Sakhi. खिलाना। आप So देखिए her major service to Lord Krishna is ये to offer ललिता सखी का फोटो betel है। leaves to Lord Krishna. ये हाथ में देख रहे हैं ना, ये कलकत्ती है कि बनारसी है, हैं? पान ये हैं? जो भी है पान है, हैं? सो भगवान श्री कृष्ण क्योंकि वो राजा है, सभी रसों के भोगता है, तंबाकू वाला पान नहीं है। So Lord Krishna is the supreme enjoyer. कृष्ण पान So लेते Lord हैं, Krishna ललिता सखी takes कृष्ण the के लिए betel leaf पान ले offered जाती by है। Lalita Sakhi. और दूसरा ललिता सखी की और एक सेवा ये है Another service of कि वे Srimati राधा Lalita रानी की Sakhi is पूजा that करती है she और खास completes करके the कन्या makeup के of बालों को, Srimati Radharani, especially और राधा she रानी अपनी puts in आंखों में place the काजल hair लगाती हैं। of Radharani and एक बात applies कहें, kajal in the eyes of Srimati Radharani. ये एक आंख में काजल लगाती है, एक आंख को छोड़ देती है, And ऐसी on लीला है purpose, you ग्रंथों में see, the कि क्यों? pastime कि goes like this कृष्ण in को the text, रिझाने के लिए, कृष्ण को that प्रसन्न on करने के लिए purpose Lalita तुरंत Sakhi कृष्ण को applies याद करके kajal in बोलते one हैं of the कृष्ण eyes के of पास जाकर Srimati के Radharani कृष्ण and अपनी leaves the आंखों में other काजल, eye कृष्ण without बहुत जोर से kajal, हंसते हैं। and this तो इस प्रकार से ललिता forces सखी की Lord Krishna to burst into laughter. रूप गोस्वामी ने ललिता सखी के विषय में एक बहुत सुंदर, Rup ये मैंने Goswami ललिता सखी wrote a का very भागवत beautiful ग्रंथ है, words मैं इसका on Lalita मूल Sakhi. आपको बताऊं श्लोक के द्वारा। ये रूप गोस्वामी ने So Rup लिखा है Goswami has written this ललिता verse सखी की on Lalita महिमा, Sakhi, what is there on your भक्तों screens. के लिए ललिता सखी की क्या आवश्यकता है। So what is the need of Lalita Sakhi हम for 2-3 दिन people से like us? Let us try to हम सुन understand. रहे हैं प्रभुदानंद सरस्वती कि राधा रानी की क्या महिमा है, श्रीमती राधा रानी की दुर्लभता, उनका चरण, उनके चरण की रज, उनकी दिशा को प्रणाम, ये सब हम देख रहे So हैं। from the words of Prabodhananda and Saraswati, we have been attempting to understand Srimati Radharani. ललिता देवी की यदि But कृपा हो जाए ना
if you see we have the mercy and blessings of Lalita Sakhi, then it becomes very easy for us to attain Srimati Radharani and to understand uncomprehensible Srimati Radharani. वृषभानुजाया प्रेक्ष्य स्वपक्षपदवी मनुरुद्धमानां सध्यस्तदिष्टघटने न कृतार्थ यन्तिं देवीं गुणेषु ललितां ललितां नमामि। देखिए, जब कोई भाषा बदलती है ना, तो ऑब्जेक्ट, वर्ब, सेंटेंस, क्रियापद ये सब आगे पीछे हो जाते हैं। इसलिए आप लोग कहोगे कि ये प्रभु जी जब श्लोक समझाते हो पीछे से क्यों शुरू करते हैं? ये मैं उर्दू नहीं पढ़ा रहा हूं, ये भाषा बदलती है तो आगे पीछे हो जाता है। अब देखिए, ये संस्कृत में है, इसको मुझे हिंदी में समझाना है तो सबसे पहले पीछे से शुरू करना होगा। सबसे नीचे आइए, नीचे के लाइन में 2-3 थर्ड लास्ट शब्द को देखिए, कहते हैं देवीम गुणे। ललिता जी में looking at the last segment of the shloka, और ऐसे देवी गुण the वाली shloka says that Lalita Sakhi has the elements of all the elements of being a Devi, and I offer my obeisances to her. So what are those qualities? कोई काम अपी माने कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं बहुत साधना किया है और साधना करके बिल्कुल सीरियस हो गया है, कभी हंसता भी नहीं है, बिल्कुल रूखा सूखा रहता है, खाता पीता नहीं है, बिल्कुल एकदम सीरियस। जरूरी नहीं है, कोई भी व्यक्ति घूमता फिरता भटकता हुआ जैसे तैसे ब्रज वृंदावन चला जाए। So an individual who reaches Vrindavan चला जाए और वृंदावन में जाकर वृषभानु जाया, उसके मन में केवल इतनी इच्छा हो जाए कि मुझे राधा रानी मिल जाए तो मैं धन्य हूं। and if he has the desire of meeting Radha Rani, जाकर राधा को so an individual, if he has a desire of meeting Radha Rani upon reaching Brij Vrindavan, and then if Lalita Sakhi gets to see that individual, then Sri Lalita Sakhi is all capable, all capacitated to catch hold of her hand and take us to Srimati Radharani. So the shloka says that in case we have the mercy and blessings of Srimati Lalita Sakhi, then by her blessings and mercy, certainly we can go on to attain at the lotus feet of Srimati Radha Rani. So you see, until and unless you have the blessings and mercy of Lalita Sakhi, then you see you can never attain Srimati Radharani. Sometimes when Radharani gets annoyed from Shri Krishna, then Shri Krishna when would come to meet Radharani, Shri Lalita Sakhi would never allow him to meet Srimati Radharani. So Shri Lalita Sakhi is very strict Sakhi, you see. So you see, Lalita Sakhi ji, you see, is all capacity. बेचारी राधा रानी तो पीछे मुस्कुरा रही है, लेकिन ललिता जो है, कहते हैं ना चाय से किटली गर्म होती है, ये किटली है, ये बहुत गर्म होती है। राधा तो फिर भी मान जाती हैं, कृष्ण थोड़े से मनाते हैं, लेकिन ललिता मानना मत, उसको रोने दे, उसको पांव पकड़ने दे। Is quite notorious as well, because she would never allow easily Radharani to agree to what Lord Krishna would say. So what I was trying to make you understand, if Lalita Sakhi
is merciful upon us, then certainly we would be able to attain the lotus feet of Srimati Radharani, and we can also enter the Ras Leela. You see, you might have heard of the context I have talked about earlier, that Lord Shiva also wanted to enter the Ras Leela of Sri Radha Shyam Sundar. पार्वती ने मना किया पर ना माने त्रिपुरारी गोकुल में आ गए गोकुल में आ गए पार्वती ने स्त्री के वस्त्र पहनाए और बिल्कुल गोपी बनाकर शिव जी को लेकर आई बाकी लोग तो पहचान नहीं पाए लेकिन ललिता ने पकड़ लिया कौन So Devi Parvati very beautifully did the makeover of Lord Shiva and brought him to Brij Vrindavan. So nobody recognized, but Lalita Sakhi recognized that it is not a Sakhi but Bholenath. So Lalita Sakhi said, just taking over the makeover of a Sakhi and Gopi, you cannot enter the Ras Leela. You should have the mood of Sakhi. So it is not about clothes and makeover, but it is the mood of Gopi. You see, higher is the place of Gopis, that even Radha. So the abode of Krishna is Golok, which is place of Gopis and not Radha Lok. ललिता जी ने ऐसा चेहरा किया अभी आप देख रहे हैं ना मेरे पीछे साइड में बिल्कुल आंखें फाड़ कर शिव जी के सामने देखती हैं यहाँ क्या आ गए यहाँ आप नहीं आ सकते शिव जी ने कहा लेकिन मुझे बोले मैंने तो गोपी का सब पहन लिया है बोले केवल कपड़ों से कुछ नहीं होगा गोपी Lalita Sakhi strongly told to Lord Shiva that your costumes or your makeover will not do. You need to have the mood of being a gopi. And then Lalita Sakhi shares mystical thing to Lord Shiva that you should first go to Mansarovar and you will develop the mood of a gopi, and then I would allow you in the Ras Leela. So after having taken a dip in Mansarovar, Lalita Sakhi allowed Lord Shiva to enter Ras Leela. So you see, you need to have mercy of Srimati Radha Rani and also the permission of Lalita Sakhi to enter into Ras Leela. So Radha Rani gives the ticket while Lalita Sakhi gives the visa for Ras Leela. लेकिन वीजा का स्टैंप ही थप्पा ना लगे तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी सो इस प्रकार से हमें समझना है राधा कृपा और ललिता की परमिशन तो ऐसी ललिता जी की कृपा से हम श्रीमती राधा रानी और रास लीला को प्राप्त कर सकते हैं We would be able to have an entry into Ras Leela and attain the lotus feet of Srimati Radha Rani by the mercy of Lalita Sakhi. So amongst all the gopis in Brij Vrindavan, 4 groups are very famous, very prominent. One is Suhad Mood Gopi, the group which has Suhad Bhavna. So they are like having a equal loving mood for Radha, Shyam Sundar and others. The second type of gopi mood is the thirst. So they follow both Bam Bhav and Dakshir Bhav gopis. Another category of gopis is Vipaksh Gopi. Vipaksh means the gopi of southern mood.
So what is that mood of southern gopis? That we belong to Krishna. दक्षिण भाव माने क्या? So Dakshin mood gopi is that we belong to Krishna. हम कृष्ण की दासी हैं, हम कृष्ण We are की the सेविका हैं, हम slaves. कृष्ण कृष्ण जैसे नचाना We are the चाहते हैं। caterers to Lord तो Krishna. दक्षिण भाव की जो गोपियां So such है, gopis, this category of उसकी gopis, लीडर, उसकी नायिका है their चंद्रावली। leader is Chandravali. दक्षिण भाव की गोपियों की जो So नायिका है Chandravali चंद्रावली है, Sakhi is the और leader of सबसे this बड़ा group. ग्रुप है, And the वो है fourth group वाम भाव is की गोपियां। Vam Bhav वाम भाव की gopis. गोपियों का कृष्ण के प्रति भाव क्या है? So what is their उसका mood भाव towards दक्षिण Krishna? दक्षिण भाग वाली का भाव क्या था? हम कृष्ण की हैं, लेकिन ये वाम वाली तो माथा भारे So वाली है, Bambhag, कहती है gopis say कृष्ण मेरे that हैं, Krishna belongs to us. कृष्ण की नहीं, The वो Dakshin Bhav हमारी है, gopis said that we belong to वो जो Krishna, है but हमारा these ही है, वो Bambhag हमारी gopis है, said that Krishna is ours. Krishna belongs to us. तो वाम भाव वाली गोपियों का ये भाव है कि कृष्ण हमारा है। So their mood is that Krishna belongs to us. जितनी भी गोपियां जो ग्रुप है, And this उसका entire leader है group ललिता सखी। is led by Lalita Sakhi. ललिता सखी उनकी लीडर है, वो So पूरे Lalita ग्रुप Sakhi leads this particular group. ललिता जी चाहे तो डायरेक्ट भगवान श्री कृष्ण से लीला सुख प्राप्त कर सकती है। So Lalita ji has all the potency and capacity to enjoy the ras sukh from Lord Krishna, but she never did that. Even Srimati Radharani said once that you can go on to enjoy the pastime happiness from Lord Krishna directly, but her pleasure lies in uniting and bringing together Srimati Radharani and Lord Krishna. So her pleasure, her happiness is just like a leaf of the tree. So as you water the roots of the tree, the water reaches the leaves automatically. Similarly, Lalita ji is engaged in uniting Lord Krishna and Srimati Radharani, and with this, she becomes happy herself. So today is her appearance day. जब इस दिव्य रस को, इस दिव्य भाव को Dear devotees, when this mood was to be presented to the individuals of the material world, but it is impossible for them to understand. So Lord Krishna then made this plan that these gopis will emerge and appear in this age of Kali Yuga as devotees and present this mood before the people. And hence, in this age of Kali के रूप में प्रकट हुई। आज से 550 वर्ष पूर्व ललिता सखी का अवतार स्वरूप दामोदर के रूप में हुआ। So it was Lalita ji who appeared as Sarup Damodar. Just like Lalita ji is the leader of Bambha Gopis, you remember the Gundicha Mandir Marjan in Jagannath temple. महाप्रभु के चरणों पर जल डाला और दूसरी ओर से वो पीने लगे, तो महाप्रभु ने देख लिया, तो देखा तो महाप्रभु उसे नहीं डांटे, स्वरूप दामोदर को बुलाए, हे स्वरूप, ये तेरा गौड़ीय मेरी फजेती कर रहा है। क्या कहा? स्वरूप तेरा गौड़ीय, ये तेरा गौड़ीय भक्त मेरी फजेती कर रहा है। मतलब चैतन्य महाप्रभु ने ये सर्टिफाइड किया कि जितने भी गौड़ीय भक्त हैं, उन गौड़ीय भक्त Even Chaitanya Mahaprabhu had certified that Sarup Damodar is the leader of all the Gaudiya devotees. So the Sarup Damodar or Lalita Sakhi, belongs to Bam Bhav Gopis. और फिर तो आप सब जानते हैं ना, जैसे राधा रानी के साथ ललिता और विशाखा रहती थी। So just as Lalita Sakhi and Vishaka Sakhi used to sit together with Radha Krishna, so the same Radha Rani came in the form of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Lalita Sakhi came in the form of Sarup Damodar, and Vishaka Sakhi came in the form of Rai Damodar. संभालने के लिए ललिता विशाखा, वैसे चैतन्य महाप्रभु को संभालने के लिए ललिता स्वरूप दामोदर और विशाखा राय रामानंद बनकर आए। So just as Lalita Sakhi and Vishaka Sakhi will take care of Radha Rani, similarly Rai Damodar and Sarup Damodar
took care of Chaitanya Mahaprabhu. ये कर रहे थे। सब तो इस प्रकार से आज So dear devotees, ललिता in this षष्ठी way, है। today is और Lalita ललिता Shashti, षष्ठी के दिन Bhadrapad ललिता Shashti, सखी का जन्म when हुआ। Lalita हम Sakhi ललिता सखी को appeared. प्रार्थना करें, हम We आते must हैं pray भाई आपके ग्रुप before में Lalita आज Sakhi that we प्रेरणा belong मिल to रहा your है। group. सो You are our राधा leader. और So, कृष्ण की Lalita सेवा के लिए Sakhi, का सौभाग्य प्राप्त करें। please इस give us the प्रकार से fortune of आइए Radha हम Krishna's आगे Prem बढ़ते हैं। Leela. So, with this mood, let us जैसे कि move हम ahead. लोग सुनते आए हैं कि शिल प्रभुपाद जी के द्वारा बहुत बड़ी विश्व में क्रांति हुई। So, you see, we all know that हरिनाम Srila Prabhupada और brought हरि about a कृष्ण revolution of कृष्ण Harinam हरे in किया। this world. और उसी स्मृति में आज And 15 दिन in the loving memory, we are celebrating for 15 days World Holy Name Festival, and today is the third day of this festival. हरिनाम की महिमा भी हम सुने। So let us talk about glory of Harinam also briefly. कुछ नई तरंगे, कुछ नया भाव। पर आज तो मैं राधिका को वादा करके आया हूं कि ऐसा सुनाऊंगा, क्योंकि आप सब लोग बहुत मेरा सुनते हैं, लेकिन कथा समाप्त होने के बाद बच्चे मुझे सुनाते हैं कि पिताजी आज जमा नहीं है, तो उनको तू जमाए है। लेकिन आज मैं वादा करके कुछ एक ऐसी बात जो बिल्कुल हमें आनंद प्रदान करेगी। तो सबसे पहले शुरुआत हम यहां से करते हैं। राम का स्वभाव कैसा है ये What तो हम is the nature of Lord Ram? We all know about it. What is the nature of Lord Krishna? Karunamayi, Kripamayi, that also is aware and known to us. But today we shall attempt to know what is the nature of Harinam. रात दिन जो हम हरि नाम लेते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस हरि नाम का स्वभाव कैसा है? What is the nature of Harinam? आइए, दो प्यार में श्री चैतन्य महाप्रभु ने हरि नाम का स्वभाव प्रस्तुत किया है। इसे गाते हुए समझने का हम सब Chaitanya Mahaprabhu has presented the glory of Harinam in this verse before you. कृष्ण नाम महामंत्रे येत स्वभाव, कृष्ण नाम महामंत्रे येत स्वभाव, येई जपे तार कृष्णे उपजये भाव, येई जपे तार कृष्णे उपजये भाव, कृष्ण विषयक प्रेमा परम पुरुषार्थ, कृष्ण विषयक प्रेमा परम पुरुषार्थ, जार आगे तृण तुल्य चारी पुरुषार्थ, यार आगे तृण तुल्य चारी पुरुषार्थ। महामंत्र का स्वभाव क्या है? So what is the nature of Mahamantra? रात दिन हम लोग महामंत्र जपते हैं। So day in and day out, we all chant the holy name. महामंत्र का भी कुछ स्वभाव है, So there is certainly a nature of Mahamantra. क्योंकि प्रभाव तो I'm not talking about effect and influence. I'm only talking about nature. लेकिन स्वभाव 24 घंटा So you साथ see, में influence रहता है। and अरे effect मरते दम तक comes आदमी का एक बिगड़ा हुआ rarely, स्वभाव होता है ना, कितना भी आप but the nature वो शमशान तक gets साथ to be में there रहेगा। all times. तो प्रभाव की बात नहीं है यहाँ, महामंत्र के स्वभाव की बात है। We are talking about the nature तो of the कृष्ण Mahamantra. नाम महामंत्रे येई त
स्वभाव, कृष्ण नाम रूपी जो महामंत्र है, उस महामंत्र का ये स्वभाव है। क्या स्वभाव है? यही जपे जो इसे जपता है। So the nature of Mahamantra is that those who chant the Mahamantra, the mood gets emanated, the mood emerges amongst the person who chants the holy name. You see, in this world, if we have anything in our possession to offer to Lord Krishna, मैंने कृष्ण को फूल चढ़ाया, अरे फूल उगा धरती पर, सब कुछ दूसरे का, तो यहाँ मैं कहाँ से आ गया? So what is it that you can offer to Lord Krishna which belongs to you? You see, it would be a fallacy to consider that you offer something to Krishna, for example, like flower or a costume or some dollars, etc., that it belongs to you. This is nothing but a fallacy. So what is it that actually belongs to you which you can offer to Lord Krishna? And what is that one thing? So there's just one thing which you can proudly say that belongs to you and that you can offer that to Sri Krishna. And what is that one thing? The mood of the heart. So the mood of your heart, the mood of your love towards Lord Krishna that you can offer to Lord Krishna. So you may not offer anything to Krishna, but if you give him that mood with love and affection, then you see Lord Krishna becomes all happy. So if you don't have love and affection to Lord Krishna, but if you don't have that love and affection and you offer everything else, Lord Krishna would never even look at it. Imagine Duryodhan, he had everything to offer. श्रीखंड भी था, कृष्ण के मुंह में पानी भी आ रहा था जैसे मुझे आ रहा है, लेकिन कृष्ण ने ग्रहण नहीं किया। क्यों? Lord Krishna never accepted that because the food was there, but the love and affection was missing. But at the house of Vidurani, there were no vyanjan, there were no delicacies, but still Lord Krishna had it because there was mood of love and affection. Even Lord Ram went on to have the berries of Shabriji because there was love and affection. भारत में कोई भी वस्तु खरीदने जाओ, भाव करना पड़ता है। किसी बड़ी से बड़ी दुकान में जाओ तो वहां भाव करना, वो 100 रुपया कहेगा, हमें 50 से शुरू करना है, फिर वो 90 कहेगा, हम 60 पर आएंगे। आज भी हमारा अनुभव है, हम दुनिया का भाव करते 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 वो दिल का भाव था वही खत्म हो गया। स्वभाव। अब ये भाव जो है यदि हमारे हृदय में नहीं है, this mood, this love and affection, if we do not have it in our hearts, then what else can we offer to Lord Krishna? So you see, this mood, love and affection is very important when it comes to Krishna. And there's no shop, there's no mall from where we can buy this bhav, this mood, this love and affection. So the only way possible to have love and affection be given to Lord Krishna is chanting of the Maha Mantra. So the one who chants Maha Mantra, he develops the love, mood and affection towards Lord Krishna. And once you develop the mood and affection towards Lord Krishna, then what is the result? Let's see in the shloka before us on our screens. कृष्ण विषयक भाव परम पुरुषार्थ, कृष्ण के प्रति जो हमारा भाव है वही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। और एक बार ये भाव प्रकट हो गया
तो जार आगे तृण तुल्य चारी पुरुषार्थ। एक बार दिल में भगवान के प्रति भाव प्रकट हो गया तो ये संसार में जितनी भी उपलब्धि है वो सब तृण के समान आपको तुच्छ लगने लगेगा। Once you develop the mood, love and affection towards Lord Krishna, then you see you would start considering all the material wealth in this world as absolutely valueless. And this mood, love and affection towards Lord Krishna will develop only by chanting the Maha Mantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. So you see, we must be strongly indebted to Srila Prabhupada, who has given so much. So he has given us the Maha Mantra, with the help of which we can develop the mood, love and affection towards Lord Krishna. So you see, so it is said that a chanting of Maha Mantra, you develop the mood towards Lord Krishna, love and affection towards Lord Krishna. But then what is Maha Mantra? Why particularly this mantra? So let us try to understand the reasoning. गत सत्र में मैंने आपको ब्रह्मांड पुराण से सुनाया महामंत्र किसे कहते हैं। मैं रोज दो तीन In the last katha I told you that what is Mahamantra by way of Brahmanda Puran. So I will keep on giving you such instances so that you can speak it out to others. In Sanat Kumar Sanhita, the question was asked that what is this Mahamantra? What is called as Mahamantra? कि भाई महामंत्र का जाप करने से भाव उत्पन्न होगा, लेकिन महामंत्र क्या है? क्योंकि So what is Mahamantra? लोग अपना मंत्र बना देते हैं और फिर स्टैम्प मार देते हैं। Because you see, in today's material world, people do create some mantra and they stamp it as if it belongs to them. वेदों में जिसको प्रमाणित किया जाता है। So you see, Mahamantra belongs to all. It is certified by the Vedas. रोज थोड़े बहुत दूंगा, लेकिन आज सनत कुमार संहिता। So in Sanat Kumar Sanhita, अनेकों प्रकार की संहिता व्यास मुनि ने लिखी हैं, तो सनत कुमार संहिता में so in Sanat Kumar Sanhita, the shloka goes something like this, which is there on your screens before you. So what is Mahamantra? Let us try to understand in this shloka. What is called as Mahamantra? We shall attempt to understand by this shloka. So Hare Krishna. Hare Krishna दो बार बोलो। Hare So, Krishna, Hare Krishna. You must speak Hare Krishna twice. Hare Krishna, Hare Krishna. You see, this is the evidence of Sanat Kumar Sanhita. भजन भक्ति साधन ये शास्त्र से प्रमाणित है। हमारे वैदिक सनातन ऋषि मुनियों ने शास्त्र की प्रमाण की पालखी पर अपने सिद्धांतों को ढोया है। ये कोई साधारण भाव। Our acharyas have carried it on the basic fundamental principles. It has been proven in our shastras. So Hare Krishna Dviravito means you should speak Hare Krishna twice. And in the similar manner again speak Krishna. And after that again speak twice Hare. That's how it becomes Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. So Hare Ram, again twice Hare Ram, and then again Ram must be spoken twice, and similarly that way is again Hare to be spoken twice. So the line goes like this: Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. So this is not a mantra which was manufactured by Srila Prabhupada or Chaitanya Mahaprabhu. Rather, you see, this is the heritage coming from our shastras. So in Sanat Sanhita, this is said that this is Mahamantra.
Now, if I was to ask you that who is the founder of Mahamantra, ये महामंत्र का फाउंडर आचार्य कौन, तो कोई so who can be called as founder Acharya of this Mahamantra? 500 वर्ष पुराना है? नहीं, महाप्रभु ने तो केवल हमको इंडिकेट किया, सिखाया कि भाई ये जपो। So Chaitanya Mahaprabhu only taught us that we must chant this holy name. महामंत्र को किस सिचुएशन में प्रकट किया गया? So who is the founder of this Mahamantra? In what circumstance this Mahamantra was produced? Who produced it? Where was it produced? Under what conditions was it produced? And if after having been produced, what was the effect? Would you be interested to know? So let us try to know this from the shloka of our Shastras. So it goes something like this. कृष्ण वीरहाद, श्लोक समझिएगा। एकदा कृष्ण वीरहाद ध्यायन्ति प्रिय संगमम् मनोवाष्पनीरासार्थम् जलपतिदं मुहुर्मुहुः, जलपतिदं मुहुर्मुहुः। एक समय की बात, एकदा, Once upon a time, it so happened that, महामंत्र लॉन्च होने जा रहा है। so you see, Mahamantra is about to be launched, isn't it? किसने किया? So once upon a time, you see, एकदा, एक समय की बात, कृष्ण विरहाद, कृष्ण के विरह में, in the mood of missing Krishna, कृष्ण के विरह में ध्यायन्ती प्रिय संगमम, प्रिया जी श्रीमती राधा रानी, Srimati Radharani, once in the mood of missing Sri Krishna, she was very, very sad. आंसुओं से रो रही थी। Continuously, tears were rolling down upon her eyes. श्रीमती राधा रानी को कृष्ण का विरह है, रो रही हैं, और उसी समय कुछ सखियां राधा के पास आती हैं। And exactly around the same time, certain Sakhis approached Radharani, and looking at Radharani, who is constantly weeping and crying in the mood of missing Sri Krishna. So the Sakhis addresses Srimati Radharani and says, "Oh Radha, oh get up, the daughter of Vrishbhanu. Why are you sitting like a fish without water in the ocean? Just like a fish leaves its body without water in the ocean." जैसे बिना जल के मछली छटपटाती है, वैसे तुम क्यों छटपटा रही हो? So Sakhis asked, "Why are you so restless, O Radharani? Why don't you get up? Should you not be sitting here all alone and weeping? O lotus-eyed, O lotus-bodied Radharani, O Radha, who gives the pleasure to to Krishna, I apologize. Oh, the companion, oh, the eternal companion of Sri Krishna. You should not be sitting in such a sad mood here. You must get up." केयूर भाई की बहुत इच्छा थी कि कुछ विरह लीला सुनावा, તમારી વિરહ લીલામાં મારી રાતની ઊંઘ ઉડી જાય છે। Keyoor Bhai had specially placed a request to us that I should be developing upon Viraha Leela. Srimati Radharani replies, "Oh dear friends, listen to me. My Shyam Sundar has gone, has left. He is not coming back. मेरे मन की साध नहीं मिटी,
मेरे मन की कामना पूर्ण नहीं हुई, my heart's desire were not fulfilled, श्याम गए and मधुपुरी Lord Shyam had left for Mathura. गए पर आने की कह गए, श्याम Though he मथुरा left, गए, but still he लेकिन said that क्या he क्या shall समझना return. की कह गए, वियोग के अथाह समुंदर को आशा के बांध से बांध गए। क्या शब्द है, श्याम मथुरा तो गए, So Lord Krishna did go to Mathura, but as he left for Mathura, he did say that he shall come back. So कृष्ण ने कहा he, था in a कि way, आप लोग मत आइएगा, मैं आऊंगा, brought a hope मैं to us that he आऊंगा। shall इसी come, शब्द he को shall जब return. करके गोपियां जी रही थी, राधा रानी जी रही थी कि कृष्ण कहकर गए हैं कि मैं आऊंगा, वो अवश्य So आएगा। the gopis and Krishna and Radharani क्या कहती हैं, had huge वियोग hope के because अथाह Lord Krishna समुंदर had को वो promised that कृष्ण he shall आशा return. के बांध बंध गए, लेकिन आशा का भी टूटा बांध, तो बता सखी Radharani further goes on to say, but all the hopes, कृष्ण जो all आशा the का बांध बांध expectation कर that गए he थे ना, shall सखी, वो arrive बांध back, बांध टूट गया है। that bridge has अब राधा जी नहीं collapsed, जा has रही, been अब devastated. धैर्य धारण Now किया no नहीं जाता more सखी। we can सखी patiently बोली क्या, wait for Lord Krishna to arrive back. Oh बंधु Sakhi, के tell me, विरह what do दाह I में do? अहर अहर दहे मन, बंधु के विरह दाह में रात दिन जल रहा है मन, दावा नल My की heart आग में is जैसे जले burning वन, जैसे दावा नल की आग में पूरा वन जलकर राख as हो I जाता miss है, Lord ऐसे Krishna. प्रिय श्याम Just सुंदर as in के the विरह forest दाह में wildfire, everything मेरी is रात burnt दिन to जल रही है। ashes. Similarly, as I सखी miss Lord दावा नल Krishna, की आग I तो am getting बुझा है burned है all बादल, throughout my heart and mind. दावा नल की आग को The बुझाए wild है forest बादल, fire लेकिन विरहा नल बुझे न, बिन is शाम के यह जल। extinguished by the rains from the clouds. दावा नल को तो But बादल के you वर्षा see, बुझा देती हैं, the लेकिन burning मेरे हृदय में, desire मेरे of मन में, missing मेरे Radha जीवन में Shyam जो आग Sundar, लगी है, missing my वो Shyam, आग तो शाम के दिन cannot जलती ever रहेगी। be extinguished, but जुलसता इस आग में लिखा जब भाग में, रात दिन कृष्ण के विरह रूपी आग में जुलसना ही मेरे भाग्य में लिखा है, तो burnt बता सखी in the इस fire of भाग्य का मैं missing क्या Sri करूं, Krishna. बता What do I सखी do with इस this fate? भाग्य का मैं क्या Oh करूं, Sakhi, tell me, what do I do with the fate यदि which निकल is जाते only प्राण, letting me to burn over and over again in यदि missing निकल Sri जाते Krishna? प्राण Had तो I पाप lost हो the life जाता, from this अरे body, कृष्ण के विरह में प्राण निकल गए होते तो ये सब then I would रात दिन have जलना और दुखी होना नहीं लिखा होता। been relieved of the pain of यदि missing निकल him. जाते प्राण तो Had my life बहुत been मरी न blown out जाना, of this गए body, प्राण I would have नाथ been तो relieved. भी न गए प्राण, However, मेरे even though प्राणनाथ चले my गए Shyam Sundar लेकिन मेरे has left, प्राण नहीं गए, who is dear to me more than my life, मेरे but still प्राणनाथ I चले am गए breathing. My लेकिन life मेरे has प्राण still नहीं not गए, gone out of निस्वार्थ this प्राण body. लेकर दीवानिशी जला करूं, तो बता सखी इस भाग्य को मैं क्या करूं, बता सखी Oh इस Sakhi, what do भाग्य I का मैं do क्या करूं। with the fate that I have had? That even अब though राधा my रानी अपने lifeblood प्राणों को कोस रही Shyam है Sundar has left, कि अरे but still I am श्याम यहाँ alive. क्या कर रहा है, So in a वो way, अभागा Radharani is प्राण lamenting upon her स्मरण lifeblood. नहीं है That तुझे। what is it doing when Radha Shyam राधा Sundar रानी has left? अपने प्राणों को कहती है कि हे So अभागे Radharani is प्राण, addressing her own मेरे प्राण lifeblood. तुझे That, स्मरण नहीं oh, है, my lifeblood, don't मन you मंदिर में remember अपने that in अर्चना my की heart थी and उनकी, mind I have gone on to प्राण worship तुझे स्मरण नहीं है Shyam कि Sundar. मन मंदिर में अपने अर्चना की थी उनकी, उन्हीं को सार जान, उन्हीं को ध्येय मान, So only Lord Krishna was कृष्ण को my ही सार goal. माना था, He was my कृष्ण को ही objective. He अपना was ध्येय माना everything. था, जब He उन्हें had been पा the जाने essence को, of my life. उनकी अपनी बन जाने को, अपना Just और upon the अपना moment बतलाने when को, I was about तब to से attain समर्प दिया him, था when I मैंने was about उन to be चरणों of में Shri मन Krishna, और प्राण दोनों को, and that I had offered both my कृष्ण को mind and पाने के heart लिए, to Lord कृष्ण Krishna. को समर्पित होने के लिए
as I was about to surrender myself to Krishna, as I was about to offer my lifeblood to Lord Krishna, I had placed my life and my heart at the lotus feet of Sri Krishna. कृष्ण को सौंपे थे, लेकिन हे प्राण, मन तो गया कृष्ण के साथ। So heart did कृष्ण नहीं go है, with जब Sri मन तो Krishna, कृष्ण के साथ चला गया, तू क्यों रह गया अनाथ? but oh my मन mind, चला गया, लेकिन प्राण why तू did यहाँ you अनाथ stay क्यों रह away? गया? Oh, the चल चल lifeblood, जा why मेरे did you सैया, stay away? You कौन should have also करेगा gone यज्ञ में? away with Lord Krishna. मन तो So, गया in a way, कृष्ण के Radharani is साथ, saying that तू she क्यों should रे have रह died गया the अनाथ? moment यदि Lord था Krishna तेरा left कोई for साथ, तो Mathura. रहता कितना शांत। So, Radharani is हे lamenting that प्राण, had the तू lifeblood मेरे also मन की gone तरह along कृष्ण with के Sri साथ चला गया Krishna, होता, then the तो तू lifeblood would भी have सुखी been हो गया real, होता, real तू भी कितना happy. शांत हो गया होता। रह कर इस देह में जिसमें धधकता विरहानल, रह कर इसे देह में जिसमें धधकता विरहानल, सोच ओ पापी प्राण, पाएगा तू क्या फल? हे प्राण, So मेरे Radharani शरीर is में अगर lamenting, अब तुझे O क्या lifeblood, फायदा होने वाला? what would you attain staying in my अरे body? मुड, राधा रानी अपने प्राणों को Radharani कहती हैं कि is मेरे प्राण sarcastically मुड, saying to its निश्चय lifeblood जाने that, O वही है lifeblood, प्राणों का what प्राण, would you यही do सभी staying प्राणों in का me? प्राण है। Because it is Lord उसी Krishna who के is जीवन से everything. जीवन, उसी के आदर से आदर, वो यदि करे अनादर, तो कौन करे समादर? अब भी ले उसे पहचान, छोड़ इस पिंजर को मेरी मान, जा बस उनके चरणों में जो Oh, तेरे lifeblood, go and जहाँ offer अनंत everything चक्र to विश्राम। Lord Krishna's lotus feet. राधा रानी अपने प्राणों को कोस रही है कि So कृष्ण चले गए, Radharani is प्राण तू अब जीकर क्या कर being रहा है? mournful तू for भी her चला जा, lifeblood, इस देह that को if छोड़कर Lord चला जा, Krishna had left, what is प्राण it तुझे doing चलना तो नहीं in पड़ेगा। Radharani? इस प्रकार So hence, in this manner, एकदा कृष्ण once, विरहाद, इस प्रकार श्रीमती राधा रानी कृष्ण के विरह में थी। so it was in और this कृष्ण के manner that विरह में Radharani was missing ध्यायन्ती Sri Krishna, सुगमम। and अभी जो आपने सुना, इस प्रकार से कृष्ण का स्मरण कर रही थी। she was मनोवाष्प निरासार mentally जलपतिदम, focusing upon Sri Krishna, अब कृष्ण के विरह में speculating योग upon the करने name के of Sri लिए, Krishna. कृष्ण के विरह में उस विरहाग्नि को शांत करने के लिए जलपति, जलपति माने जपति, राधा रानी And जप कर रही थी। in order to bring down the कृष्ण intensity के of विरह missing में Lord Krishna, जपति इधर Srimati इस Radharani was मंत्र को chanting मुहु the मुहु holy बार name बार, of Sri Krishna, कृष्ण के Muhu विरह में Muhu, उसके again and विरहाग्नि again. को शांत करने हेतु अब राधा रानी इस मंत्र को बार बार जप कर रही थी। कौन So, से to मंत्रों bring को? down the पीछे intensity आगे of लिखा she गया है, missing Sri Krishna, हरे Radharani was हरे chanting कृष्णा the name of the कृष्णा Lord again and कृष्णा again. हरे And what हरे, was that mantra? हरे It is there राम on your screens. Hare Krishna, Hare Krishna, हरे Krishna हरे। Krishna, Hare Hare, आपकी Hare Ram, जानकारी के Hare लिए Ram, इस Ram Ram, Hare महामंत्र का Hare. So फाउंडर for your आचार्य knowledge, श्रीमती let me राधा share रानी with है। this with ये you that the महामंत्र founder Acharya of जीवन में this लॉन्च mantra किया is गया है। Srimati ये Radharani. महामंत्र This जब श्री Mahamantra was वृंदावन में आ launched गया है, in इस Vrij महामंत्र Vrindavan. का This जाप करके Mahamantra was राधा uttered रानी को in the कृष्ण का missing mood विरहानल, of Sri ये Krishna, कुरूपी in the अज्ञानी को Virahanal दूर हो of Sri गया। Krishna, in the Viraha Bhav इस of महामंत्र Sri को कहने के Krishna. बाद शास्त्रों में After लिखा, having said this यानी mantra, यानी विरहे, Shastras go on to ये say what is महामंत्र there जो on है your screens, भगवान का that this नाम है, ये Mahamantra, महामंत्र विरह, राधा रानी विरह में जजाप जाप कर रही थी। Radharani was वहां chanting as she was शिवानी missing विश्वानु बाबा की बेटी, Sri Krishna. Who was विश्वानु बाबा chanting? की The पुत्री daughter of राधा रानी Vrishbhanu. So the इस daughter of महामंत्र को Vrishbhanu, बार which is बार Srimati विरह में Radharani, जाप कर was रही थी। chanting this तान Maha को Mantra as she was भाव, missing Lord Krishna. And और फिर उसी भाव में in the गौर same आचार्य mood, चैतन्य महाप्रभु
Chaitanya Mahaprabhu, when he appeared upon this world, on this earth, almost 525 years ago, and presented this Maha Mantra to the people of the age of Kali. So this is the glory and significance of Maha Mantra. You see, we have got it very easily. We have been very, very fortunate. बहुत बड़ा कमाल किया है। So this way, Srila Prabhupada has brought about a strong revolution for the humankind. This world, mankind will always, eternally, and should remain indebted to Srila Prabhupada. So, and hence, we should imbibe it in our lives, and we should make our lives more meaningful by chanting of the holy name, this Maha Mantra. Now let us attempt to understand certain things about the elements of Radharani, but before that, let's proceed for a short break. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. You know, I just have no words actually to explain about today's Katha. I mean, actually, Prabhuji took this Katha to another level, I can say. And, you know, what a glory of Harinam, जो प्रभुजी ने आज हमें श्रवण कराई. प्रभुजी को बहुत बहुत धन्यवाद कि रात भर जाग कर आप इतना कुछ श्रवण कराते हैं. So thank you very much, Prabhuji. Unimaginable, हरिनाम की महिमा जो आपने बताई है. I'm sure none of us have heard this ever before, So Prabhuji, thank you very much first of all. और बहुत ही सुंदर ब्रह्मा जी से ये कथा आपने शुरुआत की, प्रारंभ की, और वहां पर हमें श्रवण करने को मिला कि भगवान जो आनंद चिन्मय के रस है वो आपने बताया, और साथ ही साथ आज ललिता सखी का आविर्भाव दिन. So thank you Prabhuji, thank you very much. I will just say, and we'll have just a small दर्शन करते हैं गौ माता के, और पश्चात हम जो शेष कथा है उसको श्रवण करेंगे प्रभुजी के मुखारविंद से. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. तो जैसे आज पुनः हम हमारे श्री राधा गोविंद गौशाला की गौ माता के दर्शन कर रहे हैं, और ये जो हमारे कई प्रभु हैं, मुकवाना फैमिली, जिन्होंने यहाँ पर सेवा की है, इसके फलस्वरूप ये प्रतिदिन गौ माता की सेवा हो रही है. और साथ ही साथ हम जो केवी प्रभु के ब्रदर है, उनके मदर इन लॉ वो जस्ट लेफ्ट फ्यू मंथ्स बैक, उनको ये आज के दर्शन उनके लिए गौ माता से प्रार्थना करना चाहेंगे कि उनको भगवान की सेवा में बनाए रखे जहाँ कहीं भी है माता जी. और निश्चित आपके परिवार से जो इस प्रकार का ये आयोजन हुआ है, तो आप सब निश्चित भगवान की सेवा में ही रहोगे जहाँ भी है. तो हम उनके लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं और धन्यवाद करते हैं इस मकवाना परिवार को, जिन्होंने इस अद्भुत सेवा के लिए सहयोग किया है, और इस अद्भुत सेवा के फलस्वरूप हम उतनी ही अद्भुत भागवत कथा को आस्वादन कर रहे हैं. सो थैंक यू वेरी मच मकवाना फैमिली. और यदि आप भी इस प्रकार सहयोग करना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं, तो हमें अप्रोच कर सकते हैं हमारे इस कॉन्टेक्ट डिटेल पर, जहां पर आप इस विषय में अधिक सूचना प्राप्त कर सकते हैं. सो विच इज 7567545555. और आप हमें ईमेल के द्वारा भी अप्रोच कर सकते हैं, sevaperfect@gmail.com और www.perfectseva.com पर आप हमें अप्रोच कर सकते हैं इस विषय में अधिक जानकारी के लिए. तथा आप हमारी गतिविधियों को देख सकते हैं इस वेबसाइट पर जाकर. तो साथ ही साथ बहुत ही सुंदर पर्व आने वाले दिनों में आ रहा है, इस विषय में कुछ सूचना यहाँ पर. तो आने वाली 20 से 6 सितंबर पितृ पक्ष यानी श्राद्ध पक्ष है. तो just like last year, same this time also we have organized
ब्राह्मण वैष्णव भोजन तथा पितृ यज्ञ के लिए पितृ मोक्ष पूजा और श्रीमद् भागवत पाठ तथा गौ सेवा, ये सारा आयोजन हमने इस बार पुनः हमारे श्री राधा गोविंद गौशाला में किया है। तो यदि आप भी इस पितृ पक्ष में अपने पितरों की श्रद्धांजलि के लिए और श्राद्ध करना चाहते हैं, तो ये बहुत ही सुनहरा अवसर है हमारे यहाँ पर श्री राधा गोविंद गौशाला में, जहाँ पर हम इसको करने वाले हैं। आप इसमें अप्रोच कर सकते हैं हमें एक बार फिर से, और यही नंबर पर जो कि है 7567545555 तथा +12012150913, इस नंबर पर आप जो ये 15 दिन का श्राद्ध पक्ष होता है, उसी में तिथि वाइज प्रतिदिन यहाँ पर यह सेवा होने जा रही है। तो आप इस सेवा में सहयोग कर सकते हैं और आप अपने स्नेही पितरों से के लिए तर्पण कर सकते हैं। बहुत सुंदर व्यवस्था की है, जहाँ पर हम यहाँ पर ये 15 दिन लगातार श्रीमद् भागवत पाठ करने वाले हैं हमारे पितरों के लिए, तथा तिथि के लिए जो जिस तिथि के लिए पितरों की पूजा रहेगी वो प्रतिदिन होगी वहाँ पर गौशाला में, तथा प्रतिदिन वैष्णव को ब्राह्मणों को आमंत्रित किया जाएगा प्रसाद के लिए, और यज्ञ होगा तथा गौ माता की सेवा होने वाली है। तो ये बहुत सुंदर आयोजन है। एक बार फिर से हमारे श्री राधा गोविंद गौशाला ने यह आयोजन किया है, तो आप सब इसमें निश्चय अवश्य ही पार्टिसिपेट करें अपने पितरों की आपकी तृप्ति के लिए, और भगवान श्री कृष्ण की कृपा को अवश्य प्राप्त करें। सो आप सबसे निवेदन है, आप जरूर इसमें सहयोग करेगा, जरूर पार्टिसिपेट कीजिएगा। और बहुत ही सुंदर यहाँ पर आज जैसे हमने श्रवण किया कि महामंत्र का जो अवतरण किस प्रकार से हुआ था, कि हाउ इट स्टार्टेड फ्रॉम श्रीमती राधा रानी एक्चुअली इनॉग्रेटेड दिस महामंत्र, और महामंत्र किस भाव से हुआ, भगवान के विरह भाव में। तो just like Srila Prabhupada also introduced this, when we chant this महामंत्र, इस प्रकार जपना चाहिए कि जैसे कोई बच्चा अपनी जो छोटा न्यू बॉर्न बेबी है वो अपनी माता के लिए रोता है, इस प्रकार जपना चाहिए। तो आइए निवेदन करते हैं श्रीमान लाल गोविंद जी से कि इस शेष कथा को वह श्रवण कराएं। हरे कृष्णा। प्रभु कहे पढ़ श्लोक साध्येर निर्णय, प्रभु कहे पढ़ श्लोक साध्येर निर्णय, राय कहे स्वधर्माचरणे विष्णु भक्ति हय, राय कहे स्वधर्माचरणे विष्णु भक्ति हय। गोदावरी के तट पर On the banks of river Godavari, अंधेरी रात है, full black night, और इस अंधेरी रात में and in this dark night, श्री चैतन्य महाप्रभु Sri Chaitanya Mahaprabhu, ललिता और विशाखा कलयुग में राय रामानंद बनकर प्रकट हुए। मुझे एक बात याद आ रही है, Lalita and Vishakha Sakhi appeared in the form of प्रवचन करेंगे Sarup Damodar and Rai Ramanand. के अवतार है। So Rai Ramanand is रामानंद को ललिता सखी appeared in the form of Vishakha Sakhi, क्यों? but Rai Ramanand is also ब्रज लीला को स्मरण करने से believed to be Lalita Sakhi sometimes. कभी कभी See, sometimes it so happens that Lalita Sakhi, भोजन व्यंजन या खास करके food, meals, or कृष्ण betel leaf, रही है, she is approaching Lord Krishna, के बंदर आ जाते हैं, but you see the monkeys of Braj Vrindavan, सखी रुक जाती हैं, Lalita Sakhi halts by for some time and she is not able to reach on time. करनी है,
and here Lord Krishna is to be served. So in such a situation, when Lalita Sakhi ji has been halted by monkeys, so Vishakha Sakhi continues with the service of Lalita Sakhi. So this way, sometimes the services of Lalita Sakhi are taken up by Vishakha Sakhi, and the services of Vishakha Sakhi are taken up by Lalita Sakhi. So that ways, Rai Ramanand, who is Vishakha Sakhi, but sometimes he also acts as कहां तक पहुंचा पाऊंगा, लेकिन मैं शुरू तो कर conversation dialogue between Chaitanya Mahaprabhu and Rai Ramanand. What is there on your screens? प्रभु कहे, प्रभु माने चैतन्य, So Prabhu Kahe means Lord Chaitanya Mahaprabhu said. राय रामानंद, And whom did he say? He said to Rai Ramanand. Who is Rai Ramanand? Who is Vishakha Sakhi. So Chaitanya Mahaprabhu says, what is there on your screen? So Chaitanya Mahaprabhu says, Pad Shlok Sadhyer Nirnay. थोड़ी सी चर्चा हम करेंगे। So let us develop upon Pad Shlok first. महाप्रभु ने राय रामानंद से कहा कि So रामानंद Chaitanya Mahaprabhu says, श्लोक पढ़ो। O Ramananda, read the shloka. अब हमने कल सुना Now yesterday we discussed this, प्रभु ने that Chaitanya Mahaprabhu राय रामानंद को क्या कहा था, in the noon time तुम मिलना, that मुझे आपसे let us meet सुननी है, in the night time because I want to hear करनी चाहिए। the Krishna Katha. So ideally Krishna Katha should have been initiated, but Chaitanya Mahaprabhu here is asking Rai Ramanand to read the shloka, साध्येर निर्णय, and by reading shloka decide what is sadhyer. तो यहाँ पर पहले तो ये समझना होगा, So first we all need to understand here that का साध्य है कृष्ण प्रेम, प्रत्येक जीव का साध्य है कृष्ण प्रेम, what is the goal of an individual, of the soul. कृष्ण कथा It is Krishna Prem, love of Krishna. या राधा कथा का स्रोत अपने आप बहता है। And in the Krishna Katha, प्रश्न चैतन्य महाप्रभु पूछ रहे हैं, प्रभु कहे, तो क्या चैतन्य महाप्रभु नहीं जानते हैं साध्य? so this is basically being said by Chaitanya Mahaprabhu. So Chaitanya Mahaprabhu knows everything, but होती है दो प्रकार you के see, प्रश्न होते हैं। he is raising such queries एक प्रश्न for us basically. सर्वज्ञ पुरुष सर्वज्ञ को, So there are two types of queries where, एक टाइप का संवाद कैसा है, let's say, an under knowledgeable person raises a query to a knowledgeable person. जैसे शिष्य अपने For गुरु example, a student raises query to the guru, जिज्ञासा करते हैं और गुरु फिर शिष्य को ज्ञान देते and then the guru delivers the knowledge. This is one type of category. हैं। प्रश्न ये है कि Second type of question is सर्वज्ञ को पूछा somebody who has complete knowledge raises the query to under knowledgeable. So like guru also raises the question to the students. से छड़ी मारते थे, नहीं खाई है हमने, And then when you would not be able to answer, you used to be hit शिष्य को very strongly by the teacher at your school. So the guru also raises question to Shishya. चीज होती है। Now when the guru raises query, there are two things. करना चाहते हैं कि One, that guru wants to test the candidate whether he is able to understand or not. And secondly, जब शिष्य को कोई बात when guru और फिर शिष्य उसे रिपीट करता है ना, तो gets to hear the repeated version of what he has taught to the student, and the student repeats it, guru feels the happiness that his knowledge which he is delivering is not going in a waste drain, but is actually being absorbed very nicely by the candidate. I also have this same expectation that whatever I'm sharing with you is being absorbed by you properly. प्रश्न पूछ रहे हैं, Now Chaitanya Mahaprabhu is raising query to Rai Ramanand. So what is sadhya? What is the goal? जीव का लक्ष्य क्या है, What is the objective of the jeev? को पता नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं ही सर्व साध्य शिरोमणि है। सभी साध्यों के शिरोमणि राधा रानी और कृष्ण मिलित स्वरूप महाप्रभु,
लेकिन फिर भी राय रामानंद को पूछ रहे हैं, सब कुछ जानते हुए भी पूछ रहे हैं। इसका एक ही कारण है, कृष्ण शक्ति धर तुम्हें So जान। even though Chaitanya Mahaprabhu is all knowledgeable, but still he is raising such queries. And what is the reason? Because this is the nature of the lover, the nature of the saint, that despite knowing everything, he still raises such queries. कहते हैं राधा रानी कौन है, कृष्ण आप सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी इतना इतना समय निकाल कर आप कथा सुन रहे हो। इसका सार, इसका कारण यही है कि आपके हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम है और आपका स्वभाव साधु स्वभाव है। नहीं तो मेरे जैसे To अल्प me, is an indication of the fact that you people are saint-like, you are sages-like. This is your wisdom, this is your knowledge, and your humble nature that you all come and join here to listen to the Katha. So Chaitanya Mahaprabhu raising the query despite being in possession of all knowledge, and he raises the question that, oh right, tell us about what should be the goal and objective of a jeev. So this means what? That Chaitanya Mahaprabhu wants to enjoy the mellow of the Katha, and secondly, he is asking on the behalf of all the people of the world so that the people of the world can understand this element. For the betterment of the people, he is raising such a query. In Chaitanya Charitamrut, प्रश्न पूछा, Krishnaraj Kaviraj Goswami was also asked this question that when Chaitanya Mahaprabhu is all knowledgeable, he is combined form of Srimati Radharani and Sri Krishna, but still he raised such a query to Rai Ramanand. So this was the question raised to Rup Goswami in Chaitanya Charitamrut. महाप्रभु ज्ञानी है, याद रखिएगा। So please try to understand, Chaitanya Mahaprabhu is all knowledgeable, सारा ज्ञान है, लेकिन विज्ञान but he does not have the science. He has the gyan, but not vigyan. Kaviraj Goswami has very beautifully presented this in the form of shloka, which is there on your screens before you. शब्द को समझेंगे बड़ा आनंद आएगा। Let us understand every term and you will really get a blissful experience. आचार्य राम विद भक्त भेदे स्वभक्ति सिद्धांत चयना अमृतान। संचार्य राम विद भक्त स्वभक्ति भेदे सिद्धांत यामृतानि गोराब्धि एत यमुना वितीर्णे तद्ज्ञान रत्न लताम प्रयाति। कविराज गोस्वामी कहते हैं, So Kaviraj Goswami goes on to say चैतन्य महाप्रभु कौन है? that who is Chaitanya Mahaprabhu? प्रथम शब्द देखिए, गोराब्धि। See the first word of the second line, Gorabdi. Abdi means ocean. Gaur means Chaitanya Mahaprabhu. Shri Chaitanya Mahaprabhu is who? He is the ocean. आपको कहूं, Now, if I was to tell you समुद्र में बहुत जल होता है, ठीक है? that the ocean is full of all waters, समुद्र में ये बड़े बड़े हीरे मोती जो है ना, so all precious gems and stones की गहराई में होते हैं। are to be found in the depths of the ocean. की गहराई में And the divers go into the depths of the ocean and bring the pearls and precious stones. And you see, this is sold for सारे मोती huge value. ही मिलते हैं। All these precious stones को यदि are derived from the oceans. करना है, प्रोडक्ट But just in case, if the ocean was to produce these precious stones, it cannot do it all by itself. It has to engage in enterprise. And what is that process? वो रत्न भंडार So, मोतियों को प्रकट करने का प्रोसेस in order to bring forward those precious stones and pearls, जल बाष्प के माध्यम से बादलों को देगा। so the ocean would give its water by way of vapors on steam to the clouds. को देगा और बादल जब
And when the cloud would be full of holding this water, then it will bring down the rain. And that rain water, when it would enter into the shells of the sea, it transforms itself into the pearl. So there is so much water in the ocean and the sea, but it cannot create the pearl by itself, because when the rainwater enters the shell, only then a pearl is produced. Similarly, Chaitanya Mahaprabhu is just like an ocean, and Rai Ramanand is like that cloud. And Chaitanya Mahaprabhu is Sanchara Ramavid Bhakta Mede. So Chaitanya Mahaprabhu transferred his powers to Rai Ramanand. Try to understand, to propagate Bhagavad, for Bhagavad Prachar, to transform a devotee, someone into a devotee. You see, we do not have any power. It is the power of the Lord which operates within us, and only with that power people transform into devotees. And that's the reason whenever we go for any prachar, any propagation, we offer a danvat to the Lord, and we pray to the Lord that the Lord should make the power activated within us, which belongs to Him, so that we can serve Him. Ram mane Rai So Ramanand. here, Chaitanya Mahaprabhu went on to transfer his powers to Rai Ramanand. So who is Rai Ramanand? He is Bhakt Me, means he is the devotee cloud. So Rai Ramanand, who is the cloud, got the power from the ocean, which is Chaitanya Mahaprabhu. And after that, Rai Ramanand did the Bhakti Siddhant Katha. So, and that is how Chaitanya Mahaprabhu became the treasure of gems and precious stones, as he heard this knowledge of devotion from Rai Ramanand. So I offer my humble obeisances at the lotus feet of such Chaitanya Mahaprabhu and Rai Ramanand. Do you know why Chaitanya Mahaprabhu came upon this land? So the reason of the appearance of Chaitanya Mahaprabhu is to have the feel, is to experience the feel of the culminating point of Radharani's love. So today when Chaitanya Mahaprabhu sits before Rai Ramanand, you see, the work, the reason for his appearance is getting established. So far, Lord Krishna, who had come in the form of Chaitanya Mahaprabhu, प्रेम को देखा था, लेकिन आज वे स्वयं Radharani's love, he had, been blessed with the love of Radharani, but today, Chaitanya Mahaprabhu, in the form of Chaitanya Mahaprabhu, he is going to experience the love of Radharani. So, the love of Radharani is going to be presented and exhibited, and this is going to be very, very interesting. So Chaitanya Mahaprabhu and Rai Ramanand would engage in exhibiting this at the topmost level. So you all need to exercise patience and understand. So here Chaitanya Mahaprabhu said to Rai Ramanand, Chaitanya Mahaprabhu said, "O Rai Ramanand, go and do the katha, read the shloka, but whatever you shall utter before me, you would speak along with shloka. So whatever you shall speak, I don't want you to speak directly, you must speak with shloka."
So it means when you speak with shloka, you speak with evidence. यहाँ बिना प्रमाण के अंधश्रद्धा और भावुकता नहीं चलेगी. Because without shloka, without evidence, you see, there should not be actually any blind following or blind devotion. Rather, it should have evidence and sound footing of the shlokas of Shastras. So you see, in this material world, you see, we should always have philosophical background, evidence and everything whenever we talk to anyone. In Varanasi, on the banks of river Ganga, Chaitanya Mahaprabhu also said the same thing to Sanatan Goswami. तुम ग्रंथ लिखो लेकिन याद रहे जो भी चीज बताओगे मानव Chaitanya Mahaprabhu said to Sanatan Goswami that you write the Shastras, but whatever you will tell to the humankind, you would tell it with evidence. So Sanatan Goswami then wrote with wonderful evidence. For example, he said that one must perform arti to the Lord, and then he gives the evidence why this should be happening. So praman actually means evidence or proof. In Sanskrit, the meaning of this term praman is prama means Bhagavad Vishaya Vidya. And in order to imbibe that knowledge, it is called as praman. Jeev Goswami went on to give 10 proof, 10 evidence. But in Manu Samhita and in Shrimad Bhagvat Puran, 4 evidence have been talked about. Pratyaksh Praman, Ate Praman, Shabd Praman. And the evidence on which people like you and me can have a trust upon is Shabd Praman. And what is Shabd Praman? Word evidence, it is Shastras. It is Vedas. So whatever we must do in our material life, we must accept it from the Vedas and then accept it in our lives. Just because XYZ people do it, we should not blindly follow it. So Chaitanya Mahaprabhu also said that you should only listen to such things behind which there are philosophical Vedic evidences. In the 16th chapter and 23rd shloka of Shrimad Bhagvat Gita, Lord Krishna goes on to say, 16th chapter, 23rd shloka. These are the words of Yogeshwar, Lord Krishna. 16.23, Lord Krishna says in Bhagavad Gita, शास्त्र में विधि बताई गई है उसे छोड़कर उत्सृज्य माने उसे त्याग कर वर्तते काम कारत अपने जीवन में किसी भी प्रकार का कार्य करता है. कुछ लोग कहते हैं मैं ये करती हूं मैं वो करती हूं मैं तो इतना तपस्या करता हूं मैं, लेकिन शास्त्र में लिखा है मैं मंगलवार रहता हूं बुधवार रहता हूं गुरुवार, कहां लिखा है? कहां से लेकर आए हैं? कृष्ण गीता में कहते हैं कि यह शास्त्रम विधि उत्सृज्य, जीवन में जो भी करे शास्त्र के अनुसार करे. Lord Krishna says whatever you should do in your life should be done as per the injunctions given in the Shastras. And if you do anything by the way which is not given in the Shastras, you shall never get siddhi of any type. You will never get happiness. So what Lord Krishna is trying to say, that if and only if you do things in your life as commanded by the Shastras, you would be able to get the power, the siddhi, and also the eternal place, eternal abode of Lord, final destination. So if you do things which are not commanded by the Shastras, you will never be able to get, the abode of the Lord. Neither you will get happiness nor paramgati. And hence, because of this, it is very, very important that one must consider the Shastras as the evidence, and hence, considering the Shastras as the evidence, whatever assignment that you have in your life, whatever work, big or small,
important or unimportant, you must do only as commanded by the Shastras. You must do as is being given in the Shastras. This way, the life becomes meaningful, the birth becomes meaningful. Srila Prabhupada, once he was sitting in a press conference and press reporter was asking question again and again, and Srila Prabhupada was answering every question quoting Bhagavad Gita. So the reporter said that, oh, Srila Prabhupada, why are you quoting? You see, by way of Gita and Shastras. Prabhupada, who was known for his spontaneous answer, he said that I am doing it because, you see, it is Bhagavad Gita which is worth quoting. शास्त्र प्रमाण माना है और शास्त्र भी कौन सा जो वेदव्यास मुनि ने लिखा है कलयुग में तो इतना पाखंड है हमारे आपके जैसे And which Shastra? Written by Vedvyas. ये शास्त्र है नहीं व्यास मुनि ने जो लिखा चार वेद ऋग साम अथर्व यजुर 108 उपनिषद 18 पुराण महाभारत जैसे इतिहास ये सब शास्त्र है ये प्रमाण है और इन शास्त्रों को प्रमाणित करते हुए चलना होगा So these are the proven Shastras. प्रायः कलयुग में शास्त्र लुप्त होते जा रहे हैं और सुखदेव In the age of Kali Yuga, usually the Shastras are getting lost. And in Shrimad Bhagavatam, in 10.20, you know, where the seasons of rains and summer is being mentioned, Sud Goswami has expressed his sorrow over the same fact. So when the night befalls, so Shukdev ji says in Shrimad Bhagavatam, prediction for Kali Yuga basically. So when the night befalls, so this, when the night befalls, Sud Goswami says that light emitting insects appear. So in the darkness of the night, the planets are not visible. What illuminates or what is shining? The Jugnu. Similarly, in the age of Kali Yuga, so Sud Goswami says that Shastras and Vedas would be sidelined and subdued, and unworthy text would be highlighted. So what Sud Goswami said in Shrimad Bhagavatam, that just as in the night there is of the planets like sun and moon and the stars, similarly in the age of Kali Yuga, the basic shastras, the basic knowledge would be subdued, while broad knowledge would be highlighted. Further, Sukdev Goswami goes on to say, so when the monsoon time comes, when the rainy season comes, so when Indradev commands the rains, those torrential rains, leads to the bridges on many rivers and streams are broken, are flooded away. So because of the torrential strong rains, the bridges made on rivers and lakes are washed aside. Similarly, in the age of Kali Yuga, Sukdev Goswami goes on to say
that the path of Vedas, the path of Shastras would be boycotted and they would take upon their own understanding of धर्म का सेतु bridges of Shastras and Vedas. यहां पर ईश्वर, वहां पर ईश्वर के पास पहुंचने का जो सेतु है वो वेद है, लेकिन कलयुग में उस वेद को छोड़कर Takes us to the Lord. It is the connecting link between Lord and us. But in the age of Kali, because of the effect of Kali, this bridge of Shastras would itself be broken by the people of the age of Kali. So you see, Srila Prabhupada was certainly a revolutionary personality. It was impossible in the age of Kali for the sun to appear, but still Srila Prabhupada brought about the Bhagavad Rupi sun in the night of Kali Yuga. So the bridge of Shastras had been washed aside by the sinful people of the Kali Yuga, but still Srila Prabhupada was able to construct the bridge of Bhagvatam and Shri Bhagvat Gita between the humankind and the Lord. So coming back to the main thing, that Shri Chaitanya Mahaprabhu requested Rai Ramanand to read the shloka and present things with evidence. So Chaitanya Mahaprabhu is asking Rai Ramanand to speak on the basis of Shastras. Why he wanted Rai Ramanand to speak on the basis of Shastras? अप्राकृत वस्तु है, स्पिरिचुअल वस्तु है, आध्यात्मिक वस्तु है, और हमारी So why have we got this human mind? Why are we there in this world? These are all, you see, prakritik elements, and these prakritik, these are all material elements, material things. And from material things, it is impossible to establish the principles of spiritual world. So to attain that element of spiritual world, we have to associate with the spiritual elements. And what are those things? The Shastras given by the Lord to us. So we need to associate ourselves with Shastras and Vedas. It is only to exercise mercy upon people like us, Lord Krishna created Shastras and Vedas. Only by associating ourselves with Shastras and Vedas, we can understand the spiritual world. And hence Chaitanya Mahaprabhu said, read the shloka, and only by way of shloka and by evidence, tell what is the goal and objective of Jeev. Decide the goal. What is the real and ultimate objective of the Jeev? What ideally should a person do? What is he required to attain? And if you ask me, then I would say, then in this world, what is worthy of being attained in this material world, material life? Some people would say iPhone is the thing to be attained, while some people would say purchase of Tesla. Chaitanya Mahaprabhu said a very elevated thing, that what is being worthy of achieving, the highest thing in the life is, you know, something that you attain and that you have no desire left to attain anything else. Lord Chaitanya Mahaprabhu asked this to Ramananda. Ramananda said that, yes, I will certainly share this with you. So let us bring a close to this session, the third day session of 307th Katha. So I once again extend my heartfelt gratitude to the host family, Makwana family, late Shri Bechar Bhai. I extend my gratitude to Parvati Ben Makwana,
her son and daughter-in-law Dayalbhai Bimlamen, and further their sons Keyurbhai and Kokilaben, and also Ankur Bhai and Bhumi Ben, and their kid Misty. निरंतर कथा श्रवण कर रहे हैं। सो भूरी भूरी धन्यवाद। आइए देखिए, मैंने अब ये सब बोल तो रहा हूँ, पता नहीं आपको कहाँ तक समझ में आ रहा है। I really do not know to what extent do you understand and whether I'm able to make you understand or not. I'm just making an humble attempt. कोई त्रुटि हो, कोई कमी If there are any shortfalls or shortcomings, kindly ignore my जय जयकार के साथ हम आज ignorance विराम करें। and accept whatever sensible I could make out. श्रीमद् भागवतम महापुराण Hare Krishna, Radhe Shyam. श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की।